हमें बताया करते थे कि एक बार एक बहुत ही उदार आत्मा थे महर्षि चूड़क। उन्हें भी तलाश थी, उन्होंने भी वेदों को पढ़ा, एक परमात्मा की भक्ति का मंत्र ओम वेदों में उन्होंने उन्हें मिला। उससे उन्होंने फिर वर्षों तक साधना की और उसी समय पृथ्वी पर शासन था एक मानधाता चक्रवर्ती राजा का। चक्रवर्ती उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हुआ करता था। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। अश्वमेध यज्ञ में जैसा होता था कि घोड़े के गले में पत्र बांध करके सारे राज में घुमा दिया जाता था। शर्त रखी जाती थी कि जिसको भी उस राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा की गुलामी ना पसंद हो, अधीनता ना पसंद हो, वह उस घोड़े को पकड़ ले। उसमें चुनौती लिख दी जाती थी और उससे युद्ध करना पड़ेगा, और वह जाए इस घोड़े को पकड़ ले। किसी ने भी घोड़ा नहीं पकड़ा। अब ये बात महर्षि चुनक को बताई उनके शिष्यों ने जाकर के। महर्षि चुनक जी को पता चला कि राजा तो बहुत अभिमानी हो गया है, और राजा के अभिमान को देख करके ऋषि जी में अभिमान आ गया और ऋषि जी ने भी युद्ध को स्वीकार किया। फिर युद्ध शुरू हुआ। अब परमात्मा हमें बताते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि उस राजा के पास 72 करोड़ सेना थी उस समय। उसके 4 भाग करके एक भाग 18-18 करोड़ का, 18 दूनी 36, 18 तिक 54, 18 चौक 72 करोड़ सेना ने महर्षि चुनक पर आक्रमण कर दिया। अब जो महर्षि चुनक थे वो तो साधक थे। उन्होंने अपनी साधना की शक्ति उनके पास इकट्ठा थी, उससे उन्होंने 4 पुतलियां बम बनाई और राजा की ओर चारों सेना का विनाश कर दिया। तो यहाँ पर विश्लेषण करते हुए परमात्मा बताया करते थे कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म तथा परब्रह्म की जो साधना करते हैं उससे पाप और पुण्य का फल दोनों ही भोगना पड़ता है। पुण्य स्वर्ग में तथा पाप नरक में, तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे ज्ञानी आत्मा के बारे में बताया ऋषि चुनक जी, इनके पास तो ओम नाम की साधना थी। इनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। 4 पुतलियां इन्होंने बनाई। अब 4 पुतलियों को उन्होंने फेंका। वो 4 पुतलियां गई और इनके डिस्ट्रॉय हो गई। इससे फिर ये महर्षि कहलाए। और यही बताया है इस साधना का प्रतिफल फिर क्या हुआ। फिर ये कुछ समय के लिए महास्वर्ग में गए, वहां पर भोग करके फिर नरक में भेजे गए, और फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहन किए गए। इसी के बारे में बताया कि वो जो 72 करोड़ प्राणी थे, सैनिक थे, उनका संहार ऋषि जी ने वचन से किया था। वचन से किया था कहने का मतलब है उनको वचन से चोट पहुंचाई थी। उनको उसका भोग भी भोगना पड़ेगा जो उन्होंने किया था, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हथियार से हत्या करे, चाहे वचन रूपी तलवार से, दोनों को परमात्मा मान दंड देते हैं। और उस महर्षि चौड़क जी का जो जीव था वो कुत्ते के शरीर में हुआ, उसके सिर पर जख्म हुआ, वो कीड़े बन करके उन सैनिकों के जीव उस जीव के अंदर फिर प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैरों में अर्धंग होकर के केवल पैरों में घिसड़ करके ही चलेगा, और गर्मी सर्दी का जो कष्ट होगा, असहनीय पीड़ा नाना प्रकार से उसको भोगनी पड़ेगी। यही बात ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि सारी की सारी जो ज्ञानी आत्माएं हैं वह है तो उदार, परंतु जो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की जो वास्तविक साधना है उसको ना जान करके ये सब इसी घटिया अतिश्रेष्ठ जो मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं है उसी में ही आश्रित होकर के लगी रहती हैं, और अपनी साधना को अश्रेष्ठ कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में चला जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति तथा सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा बताते हैं कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोला कि फिर कई वर्षों के उपरांत पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि वेद व्यास जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म द्वारा लिपिबद्ध भी किया। इसमें बताया कि परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी। परमात्मा का जो ज्ञान है उसका अंश बताया है उसमें, और पूजा की विधि ब्रह्म तक की बताई है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है उसकी प्राप्ति के लिए किसी जानने वाले व्यक्ति के पास जाकर के पूछो, ढूंढो, फिर वह तुम्हें विधि बताएगा, वैसा करो। श्रीमद् भगवद गीता बोलने वाला गीता के अंत तक हमसे कह रहा है कि परमात्मा का जो पूर्ण ज्ञान है, विधि, वो भी नहीं जानता है। कहाँ कहा है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि इनकी भक्ति, ब्रह्म की भक्ति भी केवल, ब्रह्म की भक्ति का केवल एक ओम अक्षर है, जो उसका उच्चारण करके अंतिम श्वास तक जाप करके जाता है, वो उसकी वाली परम गति को प्राप्त होता है। और बताया है गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में क्या कहा है कि जो भी परमात्मा चाहने वाली आत्माएं होती हैं
उनको जब तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है तो वो परमात्मा की जो साधना जानता है, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही तत्व को जानता है, परमात्मा तत्व को जानता है, और जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो अनुत्तमाम परम गति में ही आश्रित रहते हैं। और इसी के बारे में स्वयं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 कि फिर वे मुक्ति चाहती हैं लेकिन वो इसी अश्रेष्ठ चीजों में ही लगी रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो भी व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन भी देवी देवताओं पितरों मीन्स एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, डीटीज वर्शिप करते हैं, यक्षों भैरव भूतों की पूजा करते हैं और मन कल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना ही कोई सिद्धि होती है, और ना ही उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इसलिए मैं बताया कि तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य जो भक्ति नहीं करनी चाहिए उसकी व्यवस्था में यू हैव योर स्क्रिप्चर्स, यू हैव योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव योर guiding map, the GPS system. And in the Srimad Bhagavad Gita, Adhyaya 17, Slok 1, when Arjuna asked the Krishna, because Arjuna was considering the Krishna is actually telling the knowledge, but it was actually the Kal Brahma who have entered into the body of the Lord Krishna, and in that he was speaking through the body, possessing the body of Krishna, and he actually says in Gita chapter 17 verse 1, those who discarded the lawful scriptures and doing what they wish to do, means worshiping the deities. What is their nature? The knowledge provider of the Gita answering the question asked by the Arjuna in 17th chapter, Slok 1 of Srimad Bhagavad Gita, he replied that the Sattvic people, they go to the deities. The Rajasi people, they go to the Yaksh and they do Rakshas worship. And the Tamsi person, they do Pret Puja. And they all are lawless work. In Gita chapter 17 verse 5 to 6, it has been said that the being discarding the law, discarding the constitution, who are actually doing what they think according to their own wish, doing tap, they are actually the dhongi, they are actually pakhandi, and they don't consider what is resided in their body, having the super consciousness in their body also. In the Sukshma Ved, it is said that my masani shed sitala bhairo bhuta hanumant, परमात्मा बता रहे हैं कि माय मसानी शेड़ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा से न्यारा रहे जो उनको पूजंत। राम भजे सो राम मिले, देव भजे सो देव, और भूत भजे सो भूत भुवे, सुनो सकल भुरवेव, कि परमात्मा को भजेंगे तो परमात्मा मिलेगा, देवताओं को भजेंगे तो देवता मिलेंगे, भूतों को भजेंगे तो भूत मिलेंगे, और अगर हम एंसेस्टर वर्शिप करते हैं तो हम भी वही एंसेस्टर ही हमें प्राप्त होंगे। So, taking conclusion from all of this, we get to know that the Rajguna Brahma, Sadguna Vishnu, and Tamguna Shivaji. The Srimad Bhagavad Gita is discarding doing the worship of all these and discarding the past worship, the ancestor worship, the Sradh Karma, the Pindadan, and the Preta Puja. And it is also said to us the Bhairav, Hanuman worship, because they were itself the devotees of Rama. And later, when there was a question that either we should do the Brahma worship or not, so in Gita, Srimad Bhagavad Gita, chapter 15, Slok 4, Paramatma told to us by providing the proof from Srimad Bhagavad Gita, chapter 15, Slok 4, that if you got the elemental knowledge of the God, after that you must search the Parampad. After going that, nobody come back in this world, nobody get born again and again. And the Brahma Sharpurush actually said in the Gita also
that this word is like a tree. The tree means it have a very large stem, that is the Akshara Brahm, and from that there is a very strong branch, the Brahm, and the branch have three small branches, the Brahma, Vishnu, and Shiva. This is actually the cosmological GPS map of this universe. And if you want to be liberated from this universe, what you need to do? The God, in the form of Gurudev, told us in the past, all the Maharshis, they all did Brahma worship, and they did, and they also asked their followers to do. And we have been those followers. Sometimes we have been the deities. We have chanted the Om many times, and that was told by the fake knowledge providers as the best. And when the God itself, who God, the Paramaksha Brahma, when he come with his whole body, like the light came with the lightest body made up of the light element, the God particle, he asked us, he tell us in Srimad Bhagavad Gita, and also we see in the Sukshma Veda and Tattva Gyana, it has been said by the God also that गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा बुझ चढ़े मूढ़ किसाना गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सारे रहे अज्ञानी. O Guru, the God itself, who doesn't born out of any mother womb, and he have the capacity, he utilizes that capacity of having his body from his place with the lighter version come to us and meet the worthy people, the Rishi Maharshi, and the Rishi Maharshi in their age, they read the Vedas, they didn't understand the summary of these Vedas, because when we see the Devi Puran, in the 6th Skanda, chapter 14, page 425, it has been written there that in the age of Satyuga, the Brahmana, Maharshi, they all were the complete knowledgeable people of the Vedas, and they did the Mother Goddess worship, and they used to make the temples in the villages. And Lord God, Paramatma, told us that in the Vedas and in the Gita, nowhere it is written that we should worship all of them and make temple of all of them. The Rishis used to read the Vedas, but they did all things against the Vedas. That means कि सारे के सारे ऋषिजन पढ़ते तो वेद थे और सारे के सारे काम उनके वैदिक वाले थे. They were not having the real knowledge. And we all know that Srimad Bhagavad Gita is actually the summary of the all Vedas. Actually, the four Vedas. And initially, there was only a Veda, Sukshma Veda, in which all the knowledge was written, and that was actually the supreme. And when we look at the Gita, nowhere it is written. Is it written? No. Vedas never said that we should worship the mother goddess and we must make temple of him and we must understand the Vedas, not how the rishis understood that. They were not actually having the true knowledge. And the Paramatma told us that those rishi maharshis, it were their will. They pick out the Om mantra, considering the best, and they did the Brahma idol worship, considering it as the best. And it has been said that they were actually the fools doing the rawest form of the worship that is being said by the Srimad Bhagavad Gita itself. And in the Satyuga, the Brahmana of the Satyuga, as we see the Sankaracharya, who used to do the Karmakanda mostly by hearing the knowledge
and spreading the propaganda in Kali Yuga. Paramatma told us these so-called gurus. In the Srimad Bhagavad Gita also, it has been said that those who used to be considered the Rakshasa in the Satyuga are actually the Brahmanas in the Kali Yuga, and they are basically doing against what is written in the scriptures. They loot, they lie, they are against the Vedic Dharma Karma, and it has been the nature of the Kali Yuga Brahmanas, the natural, obvious nature of looting, lying, and completely separated from the Vedic rituals, Vedic dharma and karma. In Srimad Bhagavad Gita, chapter 7, slok 12 to 15, it has been told to us that all three Gunas, Rajguna Brahma, Sadguna Vishnu, Tamguna Shiva, those who do the idol worship, are actually having the nature of Rakshas with मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले लोग, ये ब्रह्म कह रहा है। परमात्मा बताते हैं कि ये उनको भी नहीं बचते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने हमें कहा है, हमें बताया कि जो भी 4 प्रकार की भक्ति करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। फिर कहा कि ज्ञानी ब्रह्म को अच्छा लगता है और ज्ञानी को ब्रह्म अच्छा लगता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, अच्छी, लेकिन ये इसी की घटिया गति में आश्रित है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि इसकी भक्ति से होने वाली जो गति है वो अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। क्या कहा है? बहुनाम जन्म नामंत थे ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स परमात्मा सुदुर्लभ है, कि इनकी भक्ति बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है तथा अन्य देवी देवता व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता कि भक्ति से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 18 में उसको अनुत्तम बता दिया है, घटिया बता दिया है, राष्ट्र फॉर्म बता दिया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि यह बताने वाला परमात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है और वही सृजनहार है, वही पापनाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा के योग्य है। Who? The Paramakshar Brahma. And we have to only do his remembrance. And in Srimad Bhagavad Gita Adhyaya 18 chapter 18 slok 62 and 66 it has been said that telling to the Arjun and telling to me कि मैं सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जाऊं, उस परमात्मा की कृपा से मैं परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होऊंगा। और फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है, श्रीमद् गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते हमें स्मरण करके हम अपनी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, क्या कहा है कि तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमात्मा को उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौट करके संसार में कभी नहीं आता है। जिस परमात्मा से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की है उसी की हम स्मरण करें। और ये जो गूढ़ था, ये जो ज्ञान था, ये ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आया। परमात्मा बताते हैं कि जब परमात्मा उनको मिले थे, सतयुग में मनु को मिले थे, मनु को समझाया था, मनु ने उनको वामदेव कहना चालू कर दिया था। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में आखिर क्यों गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम कहा है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, और उसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हम सभी के भी बहुत जन्म हो चुके हैं और उनकी उत्पत्ति को ऋषि महर्षि देवता भी नहीं जानते। तो फिर हम सभी ये राजा सैनिक जो पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, हम सभी अगर विचार करें what the Brahma is saying, he actually dies, and those who worship the Brahma are actually going to die. In Gita chapter 15 slok 4, they are not getting liberated, and they are always in the cycle of the birth and death, and the sadhak never come into the world
if he go to the truth place, his birth and death is actually closed, eliminated. Until when we are in the birth and death cycle, we are never into a peace, a supreme peace. And Srimad Bhagavad Gita is also telling about his roused form of benefits in Srimad Bhagavad Gita, Adhyaya 18, chapter 18, slok 62. It has been said that for the supreme peace, we must remember the Paramakshar Brahma. And when we remember the Paramakshar Brahma, we will actually be into the supreme peace and we will be actually in the supreme place. In Srimad Bhagavad Gita, chapter 88, slok 5 to 7, it has been said to us that those who do his worship is actually going into the war. And where there is a war, there is no peace. And for the supreme peace, it has been said that it is actually the last. So, Paramatma told to us it is actually the last form of benefits which we consider and where we go. And it has been said also when we question about the liberation from doing the worship of Brahma, Vishnu, and Shiva, Ganesha, and Goddess Mother, and the Shar Brahma and Akshar Brahma, and it is actually being directed to go again, not in against, but in the Paramakshar Brahma's grace. But it's been said that if you want something and trying by your whole heart is actually what is being said, the worship, the puja. And if we consider, if we want, for example, any selection in the examination, then what we should do? The goal, the target is our selection. For that, we go to the coaching, we go to any place, we purchase all the things that are necessary to all of us, and in that, what we do what is necessary. We solve the question paper, we do the mock test, and instead of that, if we are doing anything other than that, and all those things are actually the destruction. So all those things that are being questioned by all of us, which are actually told to us that they are against the truth, they are against the supreme peace, they are actually the problems, not the solutions. So we must understand what we must understand that in Srimad Bhagavad Gita, chapter 17, slok 23, it has been told to us that the truth and the actually it is actually a direction that we must understand when we go all the scriptures and we find what is being written, what is actually